Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll see how to solve numericals of f-test and partial f-test in multiple linear regression with clear concepts and examples. So let's begin. So we have already seen in our previous videos what is f-test. So f-test is basically used for overall model significance. So now let's see the first numerical based on f-test. So the first question says a company wants to predict sales by using the first factor is X1, which is based on TV ads, and the second factor is X2, which is radio ads. So these two are my predictor variables and this one is my response variable which is to be predicted. So now what are the values that we are given? We are given with TSS. TSS is given as 5000. RSS is given as 1200. N, the number of observations is 50. And P, the number of predictors are 2. So now based on these values, the first thing that we have to do is calculate the F statistic. And the second thing is comment whether the model is useful or not. Right? So now we already know how to compute the value of F statistic. So we calculate F statistic using this TSS minus RSS upon P, RSS upon N minus P minus 1. So we have already seen this formula in our last video. So we just now to substitute these values. TSS is 5000, RSS is 1200, P is 2, RSS is 1200 divided by 50 minus 2 minus 1. So this comes out to be 3800 upon 1200 divided by 2 and divided by 47. So when we solve this comes out to be around 893 upon 12, which is equivalent to 74.41. So which is a quite large value, right? So quite large value of F, what does it indicate? It indicates that our model is very useful. So we reject the H0, the null hypothesis. What is the null hypothesis? That none of the predictors are useful in predicting my value. So we reject that hypothesis. Higher value of F indicates that my model is really useful. And at least there is one predictor which is useful. So this is what we can interpret from the higher value of F. Let's see another numerical. A student predicts marks Y using the following predictor values. X1 is study hours. X2 is given as sleep hours. And X3 is given as mobile usage. Right? And what are the values given to us? We are given with TSS, which is equivalent to 2000. RSS, which is equivalent to 1500. N is equal to 40. The number of predictors are 3. Now again we have to compute the value of F statistic and interpret its value. So now again substitute the values. F is TSS is 2000 minus RSS is 1500 divided by the number of predictors, which is 3, upon RSS is 1500 divided by N is 40 minus 3 minus 1. So this comes out to be
So we solve this and we get the value as 4.0. So 4 value is a moderate value of f. So f value equivalent to 4 indicates that my model is slightly a useful model. हम एकदम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. तो अगर f की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आती है लाइक इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल, तो वो तो इंडिकेट करता है दैट द मॉडल इज माई यूजफुल मॉडल. बट अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं आ रही है एंड वी आर गेटिंग अ मॉडरेट वैल्यू बट इट इज ग्रेटर देन 1, then it indicates that it is a likely useful model. But ऐसे cases में we also need the p value in order to make the final decision. So p value अगर आपको given होती है उस basis पे हम कैसे बता सकते हैं? If the p value of the f test is greater than 0.05, then what does it indicate? Then it indicates that my model is not at all useful. Model is not useful if the p value is greater than 0.05. But if the p value is less than 0.05, then it indicates that my model is useful and at least one of the predictors is useful in my model. Model is reliable if the p value is less than 0.05 and the model is not at all reliable if it is greater than 0.05. So since in this question the p value is not given, so we can leave up to here saying that my f value is greater than 1, so we can tell that it is a useful model. Let's go to the next question now. Now let us see one question based on partial F test. तो partial F test में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. partial F test क्या होता है? जहाँ पे हम कुछ ही वेरिएबल्स के साथ अपनी वैल्यू को चेक करते हैं, राइट? सो लेट्स से अगर मेरे मॉडल में 3 प्रेडिक्टर्स हैं, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, और हमने तीनों के साथ पहले अपने F स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कंप्यूट किया, राइट? हमें कोई सर्टेन वैल्यू मिल गई. देन हमने न्यूज़पेपर को हटा दिया, फिर से अपना टेस्ट रन किया, देन हमें कुछ सर्टेन वैल्यू मिल गई. अगर जो हमारे पास नई वैल्यू आई है अब वो पुरानी वैल्यू से और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हमें इससे क्या पता लगता है कि अगर मेरा बेसिकली एरर जो है वो बढ़ रहा है, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक वेरिएबल को हटाने से मेरा एरर बढ़ रहा है मॉडल में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको हमने हटाया वो यूजफुल था हमारे मॉडल के लिए, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, राइट? बट अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हटा के जो मेरी नई वैल्यू मिल रही है, जो मेरा एरर मिल रहा है वो कम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल हमारा कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर रहा था मॉडल में, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो सेम हम पार्शियल एफ टेस्ट के एग्जांपल में देखते हैं. हमें सपोज गिवन है आरएसएस वैल्यू. आरएसएस वैल्यू क्या होती है? जहां पे आपकी फुल मॉडल की हमें वेरिएशन पता लग रही है. फुल मॉडल की वेरिएशन, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरे पास 3 प्रेडिक्टर्स हैं, टीवी प्लस रेडियो प्लस न्यूज़पेपर. इन 3 वेरिएबल्स के साथ जो मेरी आरएसएस की वैल्यू आ रही है दैट इज गिवन एज 800. Then let's compute RSS naught. This is also given in my question, which is my reduced model. अभी अब RSS naught क्या है? RSS naught है error without those variables. तो अगर सपोज मैंने एक वेरिएबल को हटा दिया न्यूज़पेपर को, तो अब जो हमें RSS naught गिवन है वो गिवन है एज लेट्स से 900. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेट्स से 60 है. नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हमारे 3 हैं टोटल, और Q इंडिकेट करता है कितने वेरिएबल्स हमने रिमूव किए. तो हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर एक वेरिएबल को रिमूव किया, तो Q की वैल्यू 1 है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिमूव्ड. तो ये सारी वैल्यूज अभी मुझे गिवन है क्वेश्चन में. नाउ अप्लाई द पार्शियल एफ टेस्ट फॉर्मूला ऑन दिस. फाइंड द पार्शियल एफ स्टैटिस्टिक. So just substitute the value. F is equals to RSS naught minus RSS upon Q, RSS upon N minus P minus 1. So last F statistic के केस में this value is TSS, but partial F test के केस में this is RSS naught, जो है error without those variables. Substitute the values. RSS naught is 900, RSS is 800. Q is 1, RSS is 800 divided by number of observation is 60 minus 3 minus 1, which is 56. Now compute the value. My F value comes out to be 7.0 value, right? तो F की वैल्यू 7.0 क्या इंडिकेट कर रही है? that this is a moderate value, neither higher value nor a lower value. So lower value तब होती है अगर 1 के क्लोज होती है, 1 से भी लेस होती. बट क्योंकि 1 से काफी ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि f इज रीजनेबली अ लार्ज वैल्यू. सो दिस इंडिकेट्स कि जो मेरा न्यूज़पेपर वाला वेरिएबल है, इट इज एडिंग समथिंग टू माई मॉडल.
right? Hence removing newspaper will increase my error significantly. Hence newspaper should not be removed from my model. So what we can interpret, अगर मेरी f की वैल्यू रीजनेबली लार्ज आ रही है, then it indicates that the variable जिसको हमने हटाया था, which was newspaper, it adds value, hence it should not be removed. तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? We can conclude that removing newspaper from my model increased error significantly, so it is contributing some information, hence should not be removed. Contributing information, right? Let's take another example based on partial F test. सपोज हमें RSS की वैल्यू गिवन है, सपोज सेम मॉडल है हमारे पास जिसमें 3 प्रेडिक्टर्स हैं, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. Let us suppose the value of RSS is 820, which is given. The value of RSS naught is 830. Number of observations 60. P is 3. Q is 1. Now these are the values given. Compute the partial F test value, which is 830 minus 820 divided by 1 upon RSS, which is 820 divided by N minus P minus 1, which is 56. So this comes out to be 10 upon 56 into 820. So this comes out to be a value lower than 1, which is 0.68. तो 0.68 वैल्यू आ रही है f की, which is less than 1 and which is a very less value, not slightly less, it is a very less value. So f less than 1, it is indicating that removing newspaper hardly changes my error, hardly changes error. तो लास्ट एग्जाम्पल में f की वैल्यू न्यूज़पेपर को हटा के हमारी काफ़ी ज़्यादा आई थी, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि न्यूज़पेपर को हटाने से हमारा एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, हेंस इट शुड नॉट बी रिमूव्ड. बट यहाँ पे न्यूज़पेपर को हटाने से मेरी f की वैल्यू बहुत कम आई है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूज़पेपर है वो हार्डली ऐसा प्रेडिक्टर है जिसको हम हटा भी देंगे तो भी हमारे मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हेंस इट कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम माई मॉडल. So removing newspaper hardly changes error, hence this variable is just noise. This variable is just noise which can be removed and it is not contributing anything. So this is how we make interpretations and this is how we deduce from the partial F test and the F test model. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.